Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I'll tell you about the principles of watershed management. What are the principles which should be followed for management of a watershed? So there are certain principles. So first of all, you should have a clear-cut idea about the watershed. So watershed is a land area which contribute runoff to a common drainage pond outlet. So this is the watershed. Now what is watershed management? This is the efficient utilization of land and water resources for sustainable development. Or we can say it is the natural resource management. And for the natural resource management, this land and water are very important. If we talk about the natural resource management, land, water, climate and the biome means plants, animal, these are very important. So when we consider the watershed management, we should follow some principles, then we can succeed. Otherwise, there may be failure. So for effective planning or the management, we have to follow some principles. So what are those principles? So these are the principles. The first principle is utilization of land as per capability class. So here we have to use land. What is the capability classification? Actually, US Soil Conservation Services classify the land into 8 groups depending upon its structure, water holding capacity, drainage, erosion, soil cover, rocky area. There are different factors. So there are 8 classification of the land, and the first 4, first, second, third and fourth, these 4 are suitable for crop cultivation, and the last 4 means 5th, 6th, 7th and 8th, these are not suitable for the crop cultivation. So here we can grow the crop, but the some management practices. So class 1 means there is no limitation, there is no constraint, soil structure is very good, water holding capacity is very good, there is no problem. So that's why we can grow the crop easily. But in second classification, there are some constraint, there is some erosion, soil depth is reduced. So that's why we have to adopt some careful management practices. We have to adopt some erosion control measures. Then in third class, further constraints increases. There is severe limitation in the land, means slope increases, structure is poor, water holding capacity is poor, drainage is poor, erosion is high. So it means our choice of the crop is limited. It means we have to grow such type of crop which reduce the erosion, and special management is required. So we have to adopt some conservation measures. And in the fourth class, these have severe limitation with respect to soil properties, with respect to water holding capacity. It means erosion is more. So it means crop productivity is low. So we have very limited crop choice, and we have very केयरफुल मैनेजमेंट. तो ऐसी जो फोर्थ क्लास है, देखिए फर्स्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ग्रो कर सकते हैं. सेकंड क्लास में थोड़ा सा इरोजन बढ़ता है, सॉइल स्ट्रक्चर पुअर होता है, सॉइल डेप्थ कम हो जाती है. थर्ड में और सॉइल डेप्थ कम हो जाती है, मतलब सॉइल फर्टिलिटी पुअर हो रही है, इरोजन बढ़ रहा है और केयर चाहिए. और फोर्थ क्लास में बहुत ज़्यादा इरोजन हो जाता है, तो बहुत केयरफुल मैनेजमेंट चाहिए, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप चाहिए, and choice of the crop is very limited. So very careful management is required. And the further classification, 5th, 6th, 7th, 8th, these are not for crop. These are not for crop. They are generally used for pasture, forestry, wildlife and aesthetic value. Actually in this land, there may be some sandy area, maybe some rocks, there may be permanent snow cover. That's why these soils are not fit for crop cultivation, but these can be used for the pasture development, forestry. तो ये जो 5th, 6th, 7th, 8th हैं, इनमें रॉकी एरिया हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, सैंड हो सकता है, कोस्टल एरिया हो सकता है, जो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं होती हैं. तो इनमें हम फिर फॉरेस्ट्री करना चाहिए, या पास्चर्स लगाने चाहिए, या हमको पार्क डेवलप कर देना चाहिए, या कोई एस्थेटिक वैल्यू डेवलप करनी चाहिए. तो फिफ्थ, एज द नंबर इंक्रीजेज द कॉन्स्टेंट मीन्स सीवियरिटी इंक्रीजेज. सो 8th वन हैज मोस्ट सीरियस कॉन्स्टेंट्स. तो ये एक्चुअली 8th पूरा समझिए डेजर्ट है, दिस इज द सैंड, देयर इज नो क्रॉप. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई रिक्रिएशन फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं. 5th वाले में कॉन्स्टेंट्स हैं, तो पास्चर इट कैन बी यूज फॉर पास्चर, एंड 8th कैन बी डेवलप फॉर पास्चर एंड फॉरेस्ट्री, एंड इन 7th वाइल्ड लाइफ को डेवलप कर सकते हैं. सो द मोस्ट सीरियस कॉन्स्टेंट्स इन 8th क्लास.
So it means first we have to find out what are the constant, what is the erosion, what is the structure, what is water holding capacity, what are the drainage characteristics, then make the group, किस ग्रुप में ये सॉइल आती है, और उसके लिए हमें कौन से कंजर्वेशन मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे और कौन सी क्रॉप्स करनी पड़ेंगी. तो द चॉइस ऑफ द क्रॉप इज द हाईएस्ट इन फर्स्ट केस and the choice of the crop is the least in the fourth case, and these are not for crop cultivation. So these are for pastures, forestry, wildlife, etc. Okay, so watershed doesn't mean that it is only confined to crop cultivation. तो watershed का मतलब ये नहीं है कि केवल हमको यहाँ crop को ही grow करना है. In case of watershed, it is a land area, it is a geological unit, can be used for many purpose. Land use can be for many purpose. Forestry के लिए, pasture के लिए, park के लिए, किसी recreation facility के लिए, pond के लिए, crop cultivation के लिए. So it means first we have the idea about the land capability classification, which is normally known as LCC, land capability classification. Okay, so this is the first principle. तो ऐसा नहीं है हमने गए, हमने फील्ड देखा और तुरंत क्रॉप ग्रो करना शुरू कर दिया. अब मान लीजिए स्टीप स्लोप है, क्रॉप कैन नॉट बी ग्रोन. वी कैन डेवलप द पास्चर, वी कैन डेवलप फॉरेस्ट्री. रॉकी एरिया है, आप कैसे क्रॉप ग्रो करेंगे, कर ही नहीं सकते. तो इट मीन्स फर्स्ट फाइंड आउट द कॉन्स्ट्रेंट्स, देन यूज द लैंड एज पर देयर कैपेबिलिटी क्लास. उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, क्रॉप को ग्रो करने की कैपेबिलिटी है, पास्चर को है, फॉरेस्ट्री की है, या उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, जैसे सैंड है, डेजर्ट है, कुछ भी नहीं हो सकता. तो उसमें फिर वो आपको एस्थेटिक वैल्यू के लिए रख सकते हैं, रिक्रिएशन फैसिलिटी के लिए हम उसको डेवलप कर सकते हैं. Second principle is adequate covering on land surface. Adequate covering means maintain the crop residue live or dead. So grass can be maintained. Actually what happens, there is a falling raindrop, and this falling raindrop has kinetic energy and it has splash erosion. Then there is soil erosion. So there is no vegetative cover, then there is direct raindrop impact, then runoff start and it carry the soil. So if soil is bare, there is no vegetative cover, definitely there is more erosion. So that's why maintain the vegetative cover, either live or dead, so that soil erosion is reduced, runoff volume is reduced, runoff velocity is reduced. That's why our soil is conserved. So maintenance of adequate cover. Here adequate means is that if maintain a huge quantity of cover, then there will be tillage problem, sowing problem and crop emergence problem. So that's why we have to maintain the cover in such a way that देर इज नो हिंड्रेंस इन टिलेज ऑपरेशन. अब हमने बहुत मोटा कवर हमने कर दिया तो हैरो करने में दिक्कत होगी, कल्टीवेटर करने में दिक्कत होगी, सोइंग करने में दिक्कत होगी. सोइंग हमने क्रॉप की कर दी, जो इमर्ज होगी तो इमर्ज करने में दिक्कत आएगी, तो थिक कवर हो. दैट्स वाई मेंटेन द एडिक्वेट कवर, सो देयर नो प्रॉब्लम इन टिलेज, सोइंग ऑपरेशन एंड द क्रॉप मैनेजमेंट. सो एडिक्वेट कवर ऑन लैंड सरफेस reduces the soil erosion and conserve the soil moisture and also reduces the runoff volume. So this is very important principle. कभी भी soil को bare नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर वेजिटेटिव कवर मेंटेन रखना चाहिए. एंड सेकंड इज दैट विंड इरोजन इज आल्सो देयर. इफ सॉइल इज बेयर, इट इज एक्सपोज टू मूविंग विंड एंड दिस मूविंग विंड कॉज द सॉइल इरोजन थ्रू साल्टेशन, सरफेस क्रीप, सस्पेंशन. ये इसके प्रोसेस होते हैं. तो ये अगर वेजिटेटिव कवर है उसके ऊपर, तो जो विंड का इंपैक्ट कम रहेगा, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा. दैट्स वाई एडिक्वेट कवरिंग ऑन लैंड सरफेस. नेक्स्ट इज कंजर्विंग मैक्सिमम रेन वाटर वेयर इट फॉल. इट इज इंपॉर्टेंट where it falls. So rain is there, suppose the rain is there and there is a land surface, so we try to conserve the moisture in this area. It means check the runoff, check the surface runoff or drainage. Try to maintain the conserve the water. How it will conserve? If infiltration is more, if percolation is more, then it will conserve. So it is very important, particularly low rainfall area. इन लो रेनफॉल एरिया मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इज द प्रॉब्लम. अब मान लीजिए लो रेनफॉल एरिया है, वहाँ जो बारिश हुई स्लोप ज़्यादा है और वो भी पानी बह गया, खेत से बाहर चला गया, देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर. सो वी शुड ट्राई टू कंजर्व द मैक्सिमम रेन वाटर वेयर इट फॉल्स. सो इट मीन्स दिस अडॉप्ट द इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस. इन सीटू मीन्स मतलब फील्ड के अंदर जो हम मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज इन सीटू. सो दिस इज रिलेटेड विद द इन सीटू. एंड एक्स सीटू मतलब ये होता है कि खेत में पानी है, हम उसको चैनल से लेके किसी पॉन्ड में हमने इकट्ठा कर लिया, कोई टैंक बना लिया, दैट इज एक्स सीटू. सो कंजर्व द मैक्सिमम रेन वाटर वेयर इट फॉल, एंड दिस इज वेरी रेलिवेंट इन लो रेनफॉल एरिया. तो हमको क्या करना पड़ेगा, बर्न्स बनानी पड़ेंगी, फील्ड को टिल्ट करके रखना पड़ेगा,
पोरोसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, मेंटेन द वेजिटेटिव कवर, मेंटेन द ऑर्गेनिक मैटर, सो दैट इन्फिल्ट्रेशन इज मोर, स्लोप को कम करना पड़ेगा, लेवल करना पड़ेगा, पर्कुलेशन इज मोर, एंड overall water holding capacity of soil is increased. So efforts should be to increase the infiltration, percolation and water holding capacity, and there are very ways. हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, टिलेज करके हम बढ़ा सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, to increase the porosity, add the organic matter, crop residues, all these increases the water holding capacity of soil. Then in high rainfall area, what is the problem? There is huge volume of surface runoff, huge soil erosion, and the water move with a high speed. So, and this high speed of velocity causes the soil erosion. So this is the problem in high rainfall area. There is soil loss, soil erosion is more, and we cannot check the water, we cannot check the runoff. अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, खेत में पानी भर गया, अब उसको रोक नहीं सकते, वो पानी बंद को तोड़ के निकल जाएगा. The best way is provide a safe way for the runoff. So provide the safe way, safe disposal of excess water with a non-erosive velocity. Means if runoff water is moving, it should have no erosion of soil or minimum impact on soil erosion. जो वाटर मूव करेगा तो कुछ ना कुछ सॉइल तो उसके साथ जाएगी. तो ट्राई टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द वाटर. तो सेफ डिस्पोजल, इट मीन्स गिव द चैनल्स or any drainage path so that the excess water is moved along the slope. So it means we have to provide a gentle slope so that excess water is moved away from the field with safe velocity, means no erosion. Non-erosive, how it is possible that it causes non-erosive? Means maintain some small grasses in the channel. If there is no grass and soil is exposed in the channel and water is moving, then definitely soil will dissolve in water and there will be soil erosion. So that's why maintain small grasses in the drainage channel so that water is not in direct contact with the soil, and such type of channels are known as grassed waterway. तो grassed waterway मतलब जिस रास्ते से पानी हमें ले जाना है चैनल, उसमें थोड़ी घास होनी चाहिए, पेरिनियल ग्रासेस होनी चाहिए. जैसे Cynodon ductilon is very good example. It is in direct contact with the soil, and when water move in the soil, in the channel, and Cynodon ductilon is there, so water erosion is reduced. So non-erosive drainage and safe disposal. So it means grassed waterway. Grassed waterway are very important. So intentionally grasses are grown in channels, and these grasses are perennial, so that maintenance is easy and edible. और उसको कुछ हमें बाद में कुछ चारा भी मिल जाए, एडिबल हो कैटल पे. सो दिस इज द अनदर प्रिंसिपल. तो इसका मतलब कि हमें इन लो रेनफॉल एरिया कंजर्व द मैक्सिमम रेन वाटर वेयर इट फॉल, एंड इन हाई रेनफॉल एरिया सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सेस रन ऑफ. Then erosion control, it is adopted in all the conditions. So erosion control structures are made, agronomic measures are there, mechanical measures are there, engineering structures are there to control the soil erosion. Soil erosion may be due to wind or water. So a number of measures are there. तो बहुत सारे measures हैं उसके कि हम agronomic क्या हो सकता है, biological measures क्या हो सकते हैं, mechanical measures क्या हो सकते हैं. We have to adopt a number of measures, not adopt only a single approach. कोई भी एक single approach ना लें. जो भी एग्नोमिक अप्रोच हैं, चाहे स्ट्रिप क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग, कंटूर बंडिंग, कंटूर टेरेसिंग, ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर फॉर इरोजन कंट्रोल. इट मीन्स कि हमको अगर वाटरशेड मैनेजमेंट करना है तो इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को हमको फील्ड पे डेवलप करना पड़ेगा. एग्नोमिक मेजर्स हों, चाहे हमें कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने पड़े हों, चाहे हमारे कुछ उसमें स्लोप को कम करना पड़े, कुछ कंस्ट्रक्शंस करना पड़े, बंडिंग करना पड़े, टेरेसिंग करना पड़े. वी हैव टू अडॉप्ट many measures. So generally there are agronomic measures, biological measures and mechanical measures. Then groundwater recharge, it is very essential. As water move, infiltrate into the soil, percolate, and then depercolation and meet the groundwater. So that's why groundwater recharge is there. And once the groundwater is recharged, it can be used for irrigation, and it provides the water into the root zone. So groundwater recharge is must. This is important for water conservation, which is further utilized. तो अगर percolation अच्छा हो रहा है, infiltration अच्छा है, पानी नीचे तक मूव कर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ड रॉक नहीं है, सब लेयर नहीं है, कोई हार्ड पैन नहीं है, तो वाटर नीचे तक जाएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा. जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो हम ट्यूबवेल के थ्रू या किसी उसके थ्रू हम पंप से उसको ऊपर ले सकते हैं, एंड कैन बी यूटिलाइज फॉर
irrigation. So this groundwater recharge is very important. How it is possible groundwater recharge? So maximum rainwater where it fall, conserve the rainwater. Don't allow runoff. If there is huge runoff, then save velocity. Excess water, try to maintain the water into the field so that it percolate into the soil. तो हमको चारों तरफ बंड अच्छी तरह से करके रखनी पड़ेगी ताकि पानी इसमें जब रहे तो धीरे 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 करके नीचे जाए और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे. Then efficient and judicious use of stored water. And then water is stored, maybe ex situ practice, maybe tank, maybe pond, farm pond हम बना सकते हैं खेत पे. हमने वाटर को स्टोर किया, फील्ड पे हमारा वाटर था, एक्सेस वाटर था, एंड दिस वाटर कैन बी कैरीड टू ए टैंक. Suppose there is a tank, water can be stored in this tank or pond, and such type of structure are known as water harvesting structure, which store the water, and this water is further utilized for crop production. So such type of structure are called water harvesting structure. So this water harvesting is different from watershed. Watershed is the area which contribute the runoff, but water harvesting structure store the water, conserve the water, and this water is used subsequently for crop production. तो वाटर हार्वेस्टिंग कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉन्ड हैं, तालाब हैं, बड़े पॉन्ड, छोटे पॉन्ड, टैंक हैं, जिसमें हम पानी को, जो बारिश का पानी जब ज़्यादा होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में उस पानी को हम इरिगेशन के लिए यूज कर लेते हैं. तो सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर नोन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर. सो water is stored through water harvesting. Then efficient use means maximizing water use efficiency so that water loss, conveyance loss is minimum, water distribution loss is minimum. तो जब हम इस पॉन्ड वाटर को चैनल के थ्रू लाएंगे या पंपिंग से लाएंगे तो हमारा जो सीपेज लॉस है या जो इरिगेशन का जो वाटर लॉस है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. कन्वेंस इफिशियंसी ज़्यादा होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी ज़्यादा होनी चाहिए. तो दैट्स वाई इफिशियंट यूज मीन्स मिनिमम लॉस ऑफ irrigation water or rainwater, then it is efficient. Now judicious use of stored water. Judicious means suppose there are 2 or 3 component, maybe 2 or 3 crop, so and all the crops require irrigation, so apply the irrigation those crops which may cause a severe reduction in the yield. That is the judicious use. तो हम पे 2-3 क्रॉप हैं और हमको एक ही क्रॉप में इरिगेशन देनी, तो उस क्रॉप में इरिगेशन दीजिए कि जिसमें सबसे ज्यादा लॉस हो सकता है. दैट इज जुडिशियस यूज वेयर वी गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द इरिगेशन. तो यूज द इरिगेशन ऑन दोज कंपोनेंट विच गिव द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द इरिगेशन. ऐसा नहीं है कि एक क्रॉप सूख रही है हमने तुरंत उसको पानी दे दिया और दूसरी सूख रही है उसमें ज्यादा लॉस हो गया, पानी नहीं दिया. सो थिंक अबाउट दी व्हाट इज द आउटपुट एंड विच क्रॉप विल गिव द मैक्सिमम बेनिफिट and the net return and the profit. This is the judicious use of stored water. And maybe multiple use of water. Suppose there is a pond is there and this pond can be used for duckery, बत्तख को पालने के लिए कर सकते हैं. And then droppings of duckery is there. जो अब डकरी हमने पाली उस तालाब के ऊपर बना करके उसकी droppings आई. Now the water is enriched due to their droppings, their urine, excreta. Now this water can be used for irrigation. सो दिस इज द जुडिशियस और मल्टीपल यूज ऑफ वाटर. जो हमारा पॉन्ड का जो वाटर था, एक तो हमने उसके ऊपर उसमें बत्तख पाल ली, डक आ गई और उसके बाद वो उनकी ड्रॉपिंग से वो पानी इनरिच हो गया और उस पानी को हमने यूज कर लिया. दिस इज द जुडिशियस यूज और वी कैन से इट इज मल्टीपल यूज. एक पानी को हमने 2-3 बार यूज कर लिया. सो जुडिशियस एंड मल्टीपल यूज ऑफ स्टोर्ड वाटर. एंड लास्ट वन इज इफिशियंट इनहांसिंग इनपुट यूज इफिशियंसी. तो इनपुट यूज इफिशियंसी को मैं इनहांस करना है, इंप्रूव करना है. इनपुट में भी फर्टिलाइजर, मे बी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एंड फर्टिलाइजर शो पॉजिटिव इंटरेक्शन विद द मॉइस्चर एंड विदाउट मॉइस्चर, विदाउट इरिगेशन फर्टिलाइजर कैन नॉट प्ले इट्स रोल. तो फर्टिलाइजर का इंपैक्ट नहीं आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का जब तक कि सॉइल मॉइस्चर नहीं होगा. तो हमको क्या करना है, इनपुट यूज इफिशियंसी भी बढ़ानी है. दिस इज द प्रिंसिपल. एंड विदाउट इंक्रीजिंग इनपुट यूज इफिशियंसी वी कैन नॉट इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन. तो हमको इनपुट का लॉस रोकना है. इनपुट में भी फर्टिलाइजर, इनपुट में भी सोलर रेडिएशन, इनपुट में भी सीड, इनपुट में भी जेमेट्री. तो हमको इस तरह की जेमेट्री यूज करनी है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले. यूज द सर्टिफाइड सीड, रिकमेंडेड वैरायटी, टाइम ऑफ सोइंग ऑल्सो इनपुट. इट इज नॉन मॉनिटरी इनपुट. टाइम ऑफ सोइंग इज नॉन मॉनिटरी इनपुट. नॉन मॉनिटरी इनपुट्स आर दोज इनपुट इन विच नो मनी इज इन्वॉल्व. अब आप टाइम ऑफ सोइंग है, आप 1 जुलाई को बोएं, 2 जुलाई को बोएं, 10 जुलाई को बोएं मान लीजिए, तो इसमें कोई आपका पैसा थोड़ी लग रहा है. पैसा तो आपको उतना लगना है. बट सीड इज मॉनिटरी इनपुट. हाइब्रिड का सीड महंगा है, कंपोजिट का सस्ता है और लोकल वेरी चीप. सो द 2 टाइप ऑफ इनपुट्स, मॉनिटरी इनपुट विच रिक्वायर मनी एंड नॉन मॉनिटरी इनपुट विच डू नॉट रिक्वायर मनी. सो सोइंग ऑफ टाइम इज नॉन मॉनिटरी इनपुट. तो
adjust the sowing time in such a way that maximum crop production, weeding timely, maximum crop production, insect control, disease control, fertilization, time of sowing, geometry. These are different type of inputs. So try to enhance the input use efficiency so that crop production is more and we can get more benefit. So these are the overall principles of watershed management. And the first one is, first find out what is the type of the soil, whether it is eroded, high erodibility, low erodibility, steep slope, less slope, good soil structure, poor soil structure. Then there is classification, first, second, third, fourth for crop cultivation. ओके एंड फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नॉट फॉर कल्टीवेशन. तो हमको देखना भी किस कैटेगरी की सॉइल है और उसमें हम किस तरह का हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं. और वी हैव टू मेंटेन द वेजिटेटिव कवर. एंड ओवरऑल आवर एम्फेसिस इज ऑन efficient utilization of natural resources, land and water, so that sustainability is maintained and we can get good benefit. So sustainability is the main focus, and sustainability through natural resource management, and this particular natural resource are land and water. So it means we have to conserve soil as well as water. For soil conservation we have to adopt some conservation measures, agronomic measures, biological measures and mechanical measures. And for water conservation, water harvesting structure, in situ practices, ex situ practices, so that groundwater recharge is there, percolation is more, and then efficient utilization of these resources. So these are the principles of watershed management. Thank you very much.